हाय एवरीवन। सो चलिए आगे पढ़ते हैं। हम लोगों ने इतना तक देख लिया था रेसिपी में। नाउ वी हैव टू सी अदर सिम्टम्स। अब अदर सिम्टम्स क्या है? जैसे अपर एयरवे। तो क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ईयर, नोज, थ्रोट आर रेलिवेंट। ठीक है, ईएनटी का क्वेश्चन जो है रेसिपी में इट बिकम्स रेलिवेंट। rhinosinusitis often coexist with asthma. Less commonly, bronchiectasis can be an aggravating factor. Hi Shashank. So bronchiectasis हो जाएगा asthma के साथ, so it will be an aggravating factor. A common cause of chronic cough is post-nasal drip, secondarily to rhinitis. सो पोस्ट नेजल ड्रिप क्या होता है कि राइनाइटिस हुआ है, उसके बाद क्या होता है, ऐसा लगता है कि नाक में जो फ्लूइड होता है वो जब नेजल म्यूकोसा में टच होता है तो ऐसा लगता है कि कुछ है हमारे नाक में। सो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बन जाता है पोस्ट नेजल ड्रिप। और इसकी वजह से पर्सन ना क्रॉनिक कफ भी करने लग जाता है। चेंज इन द वॉइस में इंडिकेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। सो अगर वॉइस में होर्सनेस आ गया है या कुछ हुआ है तो वी कैन से कि रिकरेंट लैरेंजियल नर्व इज इन्वॉल्व्ड बाय कार्सिनोमा ऑफ द लंग। ठीक है, लंग में कार्सिनोमा होगा तो चेंज इन द वॉइस हो सकता है। समटाइम्स पेशेंट यूजिंग इनहेलेंट कॉर्टिकोस्टीरॉयड फॉर एस्मा डेवलप्स ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस। सो अगर एस्मा के लिए कॉर्टिकोस्टीरॉयड यूज़ कर रहे हैं तो ओरल कैंडिडियासिस डेवलप कर सकते हैं और इवन होर्सनेस और वीकनेस ऑफ द वॉइस। ठीक है, which improves on changing the treatment. Laryngopharyngeal reflux जो होता है increasingly is recognized as a cause of hoarseness and chronic cough and can be diagnosed on direct visualization of the upper airway. However, do not ascribe hoarseness to these causes in older patient because carcinoma of the vocal cord can also be present with hoarseness. होर्सनेस है इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है। सो ओल्डर पेशेंट में इट कुड ऑल्सो इंडिकेट टू मैलिग्नेंसी, राइट? और चेंज इन द क्वालिटी ऑफ वॉइस, या फिर उनका क्वालिटी ऑफ वॉइस ही चेंज हो गया है। लैरिंगोस्कोपी इज ऑलवेज इंडिकेटेड इफ होर्सनेस परसिस्ट फॉर मोर देन 4 वीक्स। ठीक है, 4 वीक से ज़्यादा होर्सनेस है तो हम लोग उसको लैरिंगोस्कोपी करने बोलेंगे। द स्मोकिंग एंड रिक्रिएशनल ड्रग हिस्ट्री। सो ना उसको जब ड्रग हिस्ट्री लेंगे तो स्मोकिंग हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। सो ऑलवेज टेक फुल स्मोकिंग एंड रिक्रिएशनल ड्रग एंड स्मोकिंग हिस्ट्री। डू सो इन अ sympathetic and non-judgmental way, और द डिटेल इज़ अनलाइकली टू बी एक्यूरेट। ठीक है, जज नहीं करना है हमें। द टाइम फॉर एडवाइस अबाउट smoking cessation is after completion of your assessment, not at the outset. Simply asking, do you smoke, is not enough. No voice will be astonished at how often closer probing of the question no reveals that the patient gave it up yesterday and that he states his intention of doing so from the time of your consultation. Age of stating is starting and stopping. If an ex-smoker and average consumption of both current and ex-smoker are the bare minimum information needed. Hi Shan. हाय। सो स्मोकिंग हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और बस ये नहीं पूछना है आप स्मोकिंग करते हैं। एक पेशेंट बोल देगा नहीं और वो कल छोड़ा होगा, पूछना है कब पहले कभी स्मोकिंग किया है लाइफ में, किया है तो कब से शुरू किया, कब ख़त्म किया, हर दिन आप कितना पैक लेते हो, कितने वीक में कितना लेते हो, इस तरीके से पूछना होता है। आइडेंटिफाइंग एन इंडिविजुअल एज अ
current या फिर ex smoker will greatly influence the interpretation you place on your finding upon history and examination. Almost all cases of lung cancer या फिर COPD occurs in those who have smoked. ठीक है. Recreational drug use tend to be more common in younger people. जो जवान होते हैं ना वो ड्रग ज़्यादा यूज़ करते हैं, but do not assume that this is the case, and ask all patients of all ages from all walks of life about such use. Again, sounding sympathetic rather than judgmental is crucial, and a good opening line can be, if you don't mind me asking. सो हमें पेशेंट से डायरेक्ट नहीं पूछना है, हमें पूछना है कि आप माइंड नहीं करेंगे तो क्या आप पूछ सकते हैं कि आप ड्रग यूज़ करते थे क्या, कोई नशा का पदार्थ. हीरोइन, क्रैक, cannabis and other drug are smoked, and in some cases causes more damage to the lungs than tobacco. Cannabis can cause severe emphysema. ठीक है, एम्फाइसीमा कैनबिस कॉज करता है इन यंगर पेशेंट्स who are often unaware of its effect. Use of consultation to discuss its long-term sequelae. So, family history. There's a strong inherited susceptibility to asthma. Associated atopic conditions such as eczema and hay fever, ये सब family में run करता है. May also be present in relatives of those with asthma, particularly in those who develop the condition when young. So, the occupational history. No other organ is as susceptible to working environment as are the lungs. So, रेसिपी का है तो occupational history is really important. Several hundred different substances have now been recognized as causing occupational asthma. Paint sprayers, worker in electronics, rubber or plastic industries, and woodworkers are relatively commonly affected. Always ask about a relationship between symptoms and work. Damage from inhalation of asbestos may take decades to become manifest. Most seriously, as malignant mesothelioma. In industrialized country, this one extremely rare tumor of pleura has become more common and will become even more so in the next 20 years. रेयर ट्यूमर है प्लूरा का, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में. The middle-aged individuals who present with pleural effusion, often the first sign of mesothelioma. Always ask about possible asbestos exposure in job back to the time of first employment. So basically mesothelioma जो होता है वो प्लूरा का प्लूरल इफ्यूजन या फिर ऐसा वैसा दिखने को मिलेगा. प्लूरा का बेसिकली ट्यूमर होता है. उसमें हमें पेशेंट से पूछना है कि एस्बेस्टोस का एक्सपोजर हुआ है क्या. As far as the occupational history is concerned, the best way to proceed is chronologically. Most people cannot randomly remember, for example, what they might have been doing 20 years ago, or indeed, if asked in isolation, when they worked in a particular job. However, if you start at the beginning of their life and work forward, they find it much easier to remember. Try it yourself starting from your school exams. Start by asking the patient how old he was when he left school, then what job or further education he had,
then ask him to continue through his life to the present day. Particularly for those who went on to further education, ask about holiday jobs. You might be surprised at their response, and it might be worth asking if they travel overseas with their employment, especially if they were in armed forces. Do not assume that all 80-year-old are retired, and indeed that all young patients are employed. Okay. So, list of activities that may lead to asbestos का exposure. Hey Zaha Babani ho. So I'm from India, and now we are reading medicine. So this is our Chengshin, and this is not a real textbook. This is a clinical bedside patient book, and we are reading respiratory system, the causes for which patient might have shortness of breath, cough, hemoptysis. We are reading that. So now we just read about the occupational history. Why is it important for us doctors to know the occupational history of the patient, as exposure from asbestos? So asbestos exposure can cause asbestosis. So there was my very good friend Payal. So his Mosaji, he used to work in at ship decks. Okay, ship officer. He was something. Then like so many years later, he developed mesothelioma, matlab cancer in the tumor in the pleura of the lungs, and then it was bad. And yeah, so he was in exposure to asbestos. So what are the activities that may lead to asbestos ka exposure? So mining and manufacture of asbestos, shipbuilding and aircraft manufacturing, dock and rail workers unloading asbestos from ship and train, thermal and fire insulation lagging, consultation, building repair and demolition, plumbers and gas filters. Okay, plumbers also and gas fitters also, car mechanics. So brake lining, ये लोगों भी lungs में asbestos हो सकता है. And electricians, carpenters, upholsters, manufacturer of gas mask in World War II, teachers and health workers, old school building and hospitals as the source. Family members of one of the above are working or living near an asbestos source, particularly if asbestos fibers are taken home on workers' clothing. Now the examination. Now we have reached to the point that we have taken all the history and family history, occupational history, the drug use, everything we have taken. Now it is about time that we start examining the patient, and we are keeping in mind that we are examining the patient with respect to the RS. Now first is general assessment. General assessment, ऊपर से नीचे तक we see कि how is the patient's built, well built है कि नहीं है, कैसा position है. So an examination of the respiratory system is incomplete without a simultaneous general assessment. Watch the patient as he comes into the room during your history taking and while he is undressing or climbing on the couch. If this is a hospital inpatient, is there breathlessness just on moving in the bed? Is he needing oxygen therapy? If so, at what flow rate? And what is the mode of delivery? Flow rate क्या है, mode of delivery क्या है वो ऑक्सीजन का, नेजल कैन्यूला है या वेंचुरी मास्क है, हाई फ्लो है,
Look at the observation chart and review pulse, BP, oxygen saturation, and what is the early warning score. ठीक है. A breathless patient may be using the accessory muscle of respiration, sternomastoid. So sternocleidomastoid को patient use कर रहा होगा. So हम लोगों को बताना है कि respiratory में कि is the patient using accessory muscle, right? So we have to tell that in respiratory examination. So, and in the presence of severe COPD, many patients find it easier to breathe out through pursed lip. So, is the patient breathing out through pursed lip? So we have something also here. List of common occupation that may be associated with asthma. So asthma किस किस ऑक्यूपेशन से एसोसिएटेड होता है. कार पेंट स्प्रेयर्स जो होते हैं उनमें होता है आइजोसाइनेट्स. इलेक्ट्रीशियंस जो होते हैं कोलोफोनी. देन वुड वर्कर्स में होता है. रबर प्लास्टिक इंडस्ट्री में आजमा हो सकता है. बेकर लोग हो सकता है फ्लोर डस्ट या फिर इंजाइम से अमाइलेज से. वर्किंग विथ एनिमल वेट जू कीपर्स लेबोरेटरी वर्कर्स रोडेंट यूरिनरी प्रोटीन. वर्किंग विथ एग्रीकल्चर जैसे फार्मर फिश वर्कर सैलमन प्रोटीन ये सब से हो सकता है. हेल्थ केयर प्रोफेशनल लैटेक्स एंड डायथर्मी से हो सकता है आजमा. हेयर ड्रेसर लोग को हो सकता है जैसे परसल्फेट और हीना से. टी टी सिफ्टर एंड पैकर्स को भी हो सकता है आजमा. नाउ वी हैव टू सी पॉइंट्स टू नोट इन जनरल असेसमेंट. क्या क्या देखना है. फिजिक कैसा है पेशेंट का. गेट कैसा है. वॉइस कैसा है ना. ब्रेथलेसनेस है कि नहीं. क्लबिंग ऑफ द फिंगर है कि नहीं. देन टोबैको स्टेन ऑन द फिंगर है कि नहीं. ब्रूजिंग एंड थिन ऑफ स्किन है कि नहीं. वीनस पल्सेशंस मिल रहा है क्या ना. साइनोसिस एंड पैलर देखना है. टोसिस देखना है. स्वॉलन फेस है क्या. कोलैटरल वेसल्स अक्रॉस एंटीरियर चेस्ट वॉल. इंटरकोस्टल रिसेशन है क्या. यूज़ ऑफ एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल है क्या. लिम्फ नोड है क्या. सो बेसिकली क्या क्या देखना है. ऊपर से नीचे चलते राइट. ठीक है. सो हम लोग को क्या देखना है. पहले सबसे ऊपर क्या होगा. पहले टोसिस देखेंगे राइट कि आँख इसका बंद हो रहा है क्या. एक आँख बंद है क्या या दोनों आँख बंद है क्या. स्वोलन फेस है क्या. देन हम लोग देखेंगे लिम्फ नोड्स देखेंगे गर्दन में. साइनोसिस और पैलर देखेंगे इसका. वेनस पल्सेशन देखेंगे. नाउ वॉइस देखेंगे कैसा है. ब्रेथलेसनेस देखेंगे. देन हम लोग फिर फिंगर्स में क्लबिंग देखेंगे. देन टोबैको स्टेनिंग देखेंगे फिंगर्स में. स्किन में हम लोग ब्रूजिंग देखेंगे. देन हम लोग चेस्ट में कोलैटरल वेसल्स देखना है. इंटरकोस्टल रिसेशन तो नहीं है. एसेसरी मसल्स तो नहीं यूज़ कर रहा है पेशेंट. So see this figure, this picture, this is a man. So respiratory failure, the patient is breathless at rest. At rest we are breathless and there is central cyanosis with blueness of the lip. Lip जो है ये blue हो रखा है. And face भी blue हो रखा है. The lips are pursed during expiration. So जब सांस छोड़ रहे हैं तो ये मुंह को पर्स करके रखें. Characteristic feature of COPD. This facial appearance is often accompanied by heart failure. ठीक है. हार्ट फेलियर accompany करता है with peripheral edema, corpus Manel. Okay. Now what else we have to see in general assessment? So is there an audible wheeze या फिर stridor? Hey Shashank.
Are you, मतलब, did you reach here? Or are you still in the bus? Please comment. So is there an audible wheeze या फिर stridor? Wheeze क्या होगा? Wheeze तो आपको सुनाई देगा, right? वो lungs से आएगा. Stridor आपको गले से आवाज आएगा. कुछ stridor या wheeze सुनाई पड़ रहा है क्या? Then we can see, is the voice hoarse? Is the patient continually coughing, dry or productive? Is the patient capable of producing a normal explosive cough? Or is the voice weak and non-existent even when he is asked to cough? बोल रहे हैं कि कफ करिए पर वॉइस बहुत वीक है क्या? इज द wheezing audible, usually loudest in expiration, or is the stridor high pitched inspiratory noise? स्ट्राइडर क्या होता है? इंस्पिरेटरी हो जाएगा, और वीज क्या होगा? एक्सपिरेटरी हो जाएगा, है ना? हाँ. Okay. So, what is on the bedside table? Inhalers, a peak flow meter है, टिश्यू है, स्पूटम पॉट है, एन ऑक्सीजन मास्क रखा हुआ है, नेब्यूलाइजर रखा हुआ है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर मशीन रखा हुआ है. क्या रखा हुआ है? साइंस टू लुक फॉर इन द हैंड्स. हैंड में क्या क्या देखना है? तो हम लोग को देखना है कि इसका क्लबिंग तो नहीं हो गया है, ऐसे करके हम लोग क्लबिंग देखेंगे, या फिर इसमें देखेंगे डायमंड शेप बन रहा है कि नहीं. ओके ना, पैलर तो नहीं है. ये हम लोग हाथ में, पाम में भी देख सकते हैं, फिंगर्स में भी देख सकते हैं, और आँख के लोअर पैल्पेब्रा में देखना बेटर होता है. वार्म है कि नहीं हाथ की, वेल परफ्यूज्ड पाम, CO2 रिटेंशन तो नहीं हो रहा है ना, साइनोसिस तो नहीं है, ब्लू तो नहीं हो गया. फ्लैप्स देखेंगे हाथ में, पता नहीं क्या होता है. ट्रेमर्स देखेंगे, देयर इज नो ट्रेमर समथिंग. टोबैको स्टेनिंग नहीं है. नाउ ब्रशिंग एंड और थिन स्किन तो नहीं है. पल्स रेट एंड कैरेक्टर देखेंगे. Now observing the chest, so this is what we reached the inspiration. अब inspiration में क्या देखना है? Rate of respiration लेंगे कि 12 साइकिल्स पर मिनट या 15 साइकिल्स पर मिनट ब्रीथ कर रहे हैं. देन रिदम क्या है? एब्डोमिनोथोरैसिक है, दोनों रिदमिक है कि क्या है? चेस्ट एक्सपेंशन कितना हुआ है वो बताएंगे, थोरैसिक साइड का भी बताएंगे, एंड एपी डायमीटर भी बताएंगे. नाउ सिमेट्री बताएंगे, शेप ऑफ द चेस्ट बताएंगे, इलेप्टिकल है, और बहुत छोटे बच्चे और बहुत ओल्डर बच्चों में, मतलब बहुत छोटे बच्चों में और बहुत बूढ़े लोगों में सर्कुलर चेस्ट हो जाता है. नाउ बैरल चेस्ट है, फनल चेस्ट है, क्या है बताएंगे. सर्जिकल स्कार्स है कि नहीं वो बताएंगे. what is the physique and state of general nourishment of the patient, कि patient किस तरीके से generally nourished है वो. ये तो हमारा ये में आ गया जनरल असेसमेंट में. For the examination, patient should be resting comfortably on a bed or a couch supported by pillows so that he can lean back comfortably at an angle of 45 degree. This is often more upright than patient chooses for themselves. Now upper airways देखेंगे. A comprehensive account of examination of the upper airway is given in chapter 22. A focused assessment should be included in the evaluation of all new patients and those with new upper airway. Hands. The hands should be inspected for clubbing, pallor, cyanosis. Tobacco stained finger may indicate a heavy smoker. Respiratory causes of clubbing include carcinoma of the bronchus. रेस्पिरेटरी कॉज क्या हो सकता है ये क्लबिंग का? सो CA हो सकता है ब्रोंकस का. पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है. ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है. लंग में एब्सिस हो सकता है. प्लूरल एम्पाइमा हो सकता है.
अ फाइन ट्रेमर जो होगा इस तरीके से में इंडिकेट यूज़ ऑफ इनहेलेंट बीटा टू एगोनिस्ट। एजमा में जो यूज़ किया जाता है ना, बीटा टू एगोनिस्ट में ट्रेमर्स आता है, सच एज सैल्ब्यूटामॉल। सो अ फ्लैप में इंडिकेट CO2 रिटेंशन और हाइपरकेपनिया। आई डोंट नो व्हाट फ्लैप इन फिंगर इज, बट वो CO2 का रिटेंशन हाइपरकेपनिया दिखाता है। सच पेशेंट्स ऑफन आर ऑफन ड्राउजी, उन्हें बहुत नींद आती है, विथ वार्म हैंड्स एंड अ बाउंडिंग पल्स। वार्म हैंड, बाउंडिंग पल्स और ड्राउजी होता है। इन अ सिग्निफिकेंट एजमा अटैक, एजमा का अटैक आया, द पल्स रेट इज़ यूजुअली रेज्ड, पल्स रेट जो है वो बढ़ जाता है। द सिस्टोलिक बीपी जो है वो फॉल कर जाता है ड्यूरिंग द सीवियर इंस्पिरेटरी एफर्ट ऑफ एज acute asthma, and the degree of this fall, the degree of pulse paradoxicus, can be used as measure of asthma severity। हम लोग देखते हैं कि कितना सिस्टोलिक बीपी फॉल किया है, तो उससे पता चल जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पल्सस पैराडॉक्सिकस, तो पता चल जाता है कि कितना सीवियर है एजमा। सो रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम, द रेस्पिरेटरी रेट एंड पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन should be noted. The normal rate of respiration in a relaxed adult is about 14 to 16 breath per minute. Normal इतना होता है। सो देयर इज़ अ स्टोरी, जब मैं और आयुष व्हेन वी वर टेकिंग हिस्ट्री, तो द पेशेंट जो था उन्हें निमोनिया हो रखा था, वो बहुत ज़्यादा डीप, मतलब वो बहुत ज़्यादा शैलो और बहुत जल्दी रैपिड ब्रीथ कर रहे थे। बट देन आई टोल्ड आयुष टू टेक सो रेस्पिरेटरी रेट। I don't know how he took. He said 14 breath per minute, and 14 cycles per minute. And when I presented, I got scolding from ma'am, bro. That one side you are saying he's having shortness of breath, and the other side you are saying 14 breath per minute. What is this? So ट्रेकेपनिया क्या होता है? 20 ब्रेथ पर मिनट से ज़्यादा हो जाएगा। ट्रेकेपनिया इज इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट ऑब्जर्व्ड बाय द डॉक्टर, वेयर एज डिस्पनिया जो होता है इज़ अ सिम्टम। सो टेक्निया एक साइन है और डिस्पनिया जो है सिम्टम है ऑफ ब्रेथलेसनेस एक्सपीरियंस्ड बाय द पेशेंट। एपनिया मीन्स सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सो चेनी स्टोक ब्रीदिंग जो होती है is the name given to a disturbance of respiratory rhythm in which there is cyclic deepening एंड क्विकनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। हाफने लग जाएंगे, ठीक है, डीप होगा पर इस तरीके से हम लोग सांस लेंगे चेनाइल स्ट्रोक ब्रीदिंग में। एंड व्हाट इज फॉलोड बाय डिमिनिशिंग respiratory effort and rate, sometimes associated with short period of complete apnea, and the cycle then often being repeated, right? This is often observed in a severely ill patient and particularly in severe cardiac failure, heart failure हो गया या फिर severely ill हुआ है तब देखते हैं। नार्कोटिक ड्रग पॉइजनिंग या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इट इज़ कॉमनली सीन स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप in elderly patient without any obvious serious disease. Some patient may have apneic episode during sleep owing to the complete cessation of respiratory effort. Central apnea हो सकता है और much more commonly apnea despite continuation of respiratory effort, मतलब सांस लेने का कोशिश कर रहे हैं पर फिर भी पूरा सांस रुक गया है। This, which is known as obstructive sleep apnea, is caused by obstruction of the upper airway by soft tissue in the region of the pharynx and is most common in obese patient. Okay, so these are the things that we will see in the patient: respiratory rate and rhythm. So next we will see venous pulses. ठीक है, so the venous pulses in the neck should be inspected. JVP basically, a raised JVP जो होता है may be a sign of cor pulmonale, right heart failure,
caused by chronic pulmonary hypertension in severe lung disease. Commonly COPD. So pitting edema of the ankle and sacrum is present. जेवीपी बढ़ जाएगा, पिटिंग एडिमा मिलेगा एंकल और सीक्रम का, सीक्रम मतलब पीठ का, राइट. However, engorged neck veins can also be caused by superior vena cava obstruction, usually because of malignancy in the upper mediastinum. Superior vena cava obstruction can also be associated with facial swelling. क्या क्या होगा? फेशियल स्वेलिंग होगा, जेबीपी बढ़ जाएगा, एंड प्लीथोरा मतलब रेडनेस, एंड कोलैटरल सर्कुलेशन अक्रॉस एंटीरियर चेस्ट वॉल. एंटीरियर चेस्ट वॉल में कोलैटरल्स खुल जाएंगे, राइट. We are just in general examination. Now head में क्या जनरल एग्जामिनेशन करेंगे. सो द एग्जामिनेशन ऑफ द आई में रिवेल एनीमिया और रेयरली हॉर्नर सिंड्रोम सेकेंडरी टू अ कैंसर एट द लंग्स का एपेक्स. लंग्स के एपेक्स में अगर कैंसर होता है, पैनकोस्ट ट्यूमर, तो एनीमिया मतलब हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है. इन्वेडिंग द सर्वाइकल sympathetic chain. The lips and tongue should be inspected for central cyanosis. So central cyanosis, ये बहुत लोगों को confusion होता है. तो central cyanosis के लिए हम लोग lips भी देख सकते हैं and tongue भी. एक मैम ने कहा था कि lips peripheral होता है, but no, lips is central cyanosis के लिए देखते हैं. विच ऑलमोस्ट ऑलवेज इंडिकेट पुअर ऑक्सीजनेशन. इसका मतलब है कि ऑक्सीजनेशन जो है वो पुअर हो रहा है, तभी सेंट्रल साइनोसिस हुआ है. ऑफ द ब्लड बाय द लंग्स, वेर एज पेरिफेरल साइनोसिस अलोन कैन यूजुअली ओइंग टू पुअर पेरिफेरल परफ्यूजन. ठीक है. ओरल कैंडिडा में इंडिकेट द यूज ऑफ इनहेलेंट स्टीरॉयड or be a sign of deliberation or underlying immune suppression in the patient, right. Then we go on to RS ka systemic examination, which is very 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 important. मैंने अच्छे से नहीं किया था, पता है, RS का examination. I got scolded from ma'am and I did not like it at all. I felt so bad. Yeah bro, I did feel so bad. सो गाइस, हम लोग कहाँ पे थे? सो अब हम लोग चेस्ट का सिस्टमिक एग्जामिनेशन पे जाते हैं. सो रेलिवेंट एनाटमी. सो इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंस इन द चेस्ट ऑफन causes problem for beginners. A review of the relevant anatomy may help. The bifurcation of the trachea corresponds to the anterior chest wall with sternal angle. सो स्टर्नल एंगल जो होता है ना, वहाँ पे बाइफर्केशन होता है. द ट्रांसवर्स बोनी रिज एट द जंक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम. द मैन्यूबरम स्टर्नाई. सो ये बेसिकली बता रहा है एंगल ऑफ लुई कहाँ पे. एंड पोस्टीरियरली द लेवल इज एट द डिस्क बिटवीन द फोर्थ एंड द फिफ्थ thoracic vertebra. Okay. The ribs are most easily counted downwards from the second costal cartilage, which articulates with the sternum at extremity of the sternal angle. So a line from the second thoracic spine to the sixth rib
in line with the nipple corresponds to the upper border of the lower lobe. कहाँ से सेकंड स्पाइन से लेकर के सिक्स्थ स्पाइन तक अपर बॉर्डर ऑफ लोअर बोर्ड है लोअर लोब. Oblique or margin interlobular fissure. On the right side, a horizontal line from the sternum at the level of the fourth intercostal cartilage drawn to meet the line of the major interlobular fissure. Mark the boundary between upper and middle. Lobes, the horizontal or minor interlobular fissure. The greater part of each lung, as seen from behind, is composed of the lower lobe. Wait a second. Somebody called. Now, लोअर लोब, ये जो ग्रेटर पार्ट लंग का होता है ईच लंग का वो लोअर लोब को करस्पॉन्ड करता है. ओनली द एपेक्स बिलोंग टू द अपर लोब. एपेक्स जो होता है ना that belongs to the upper lobe. The middle and upper lobe on the right side and the upper lobe on the left side occupy most of the area in front. This is मतलब पीछे जो होता है ना वो लोअर लोब होता है और अपर और मिडिल राइट में सामने वाला ऑक्यूपाई करता है एंड अपर जो होता है वो लेफ्ट में पूरा सामने में ऑक्यूपाई करता है राइट. This is most easily visualized if the lobes are thought of as two wedged fitting together, not as two cubes piled one on top of each other. A stethoscope is so much a part of the image of a doctor that it is very easily for the student to forget that listening is only one part of the chest examination. Obtaining the maximum possible information from your examination requires you to look, then to feel, and then to listen. सो बेसिकली हम पीछे में भी एग्जामिन करते हैं ना लंग्स को तो क्योंकि वो लोअर लोब होता है लंग्स का मोस्टली लोअर लोब जो होता है वो पीछे में सुनाई देगा एंड देन अपर लोब और मिडिल लोब जो होता है मिडिल लोब तो केवल राइट में होता है वो आगे में सुनाई देता है राइट. नाउ लुकिंग इंस्पेक्शन ऑफ द चेस्ट. सो inspection of chest. Appearance of chest. First look for any obvious scars from previous surgery. देखो कि कोई स्कार प्रेजेंट है क्या. ठीक है क्या क्या हमें लुक करना है वो मैं मार्क कर दे रही हूँ. स्कार thoracotomy scars from lobectomy or pneumonectomy removal of the whole lung are usually visible running from below to the scapula. Are usually visible running from below the scapula posteriorly sweeping round the axilla to the anterior chest wall. Pleural procedures such as intercostal drain insertion, biopsy or VATS यानी video assisted thoracoscopy surgery may be associated with small scar, often in the axilla or posteriorly. A small scar above the sternal notch
indicate previous tracheotomy. Older patient may have small scar in the midline below the clavicle, indicating a phrenic nerve का crush. A previous treatment of TB. Look for any lump. उसके बाद lump देखना, visible beneath the skin or any lesion on the skin itself. If you are examining from the right of the patient, ensure that you thoroughly inspect the left side. It is easy to miss a lateral thoracotomy scar or one that is hidden in the skin fold. Take care. Next, inspect the shape of the chest itself. Then क्या फिर हम लोग को इंस्पेक्ट करना है शेप ऑफ द चेस्ट. नॉर्मल चेस्ट इज बायलैटरिकली सिमेट्रिकल, दोनों साइड सिमेट्रिकल है. और इलेप्टिक्स मतलब पता है इस तरीके से. चेस्ट इज दिस. पहले बच्चों का क्या होता है, ये सर्कल सा होता है, पर हमारा इस तरीके से होता है. इलेप्ट्रिकल इन हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन with the narrower diameter being anteroposterior. जो ये वाला है ये anteroposterior, ये narrow diameter. The chest may be distorted by disease of the rib or spinal vertebra. रिब या फिर स्पाइनल वर्टिब्रा का डिजीज की वजह से चेस्ट जो है डिस्टॉर्ट हो सकता है. as well as by underlying lung disease. Lobar collapse produces characteristically change on the X-ray. लोबर अगर कोलैप्स हो रखा है तो चेंज इन द एक्सरे एज सोन इन फिगर दिस. काइफोसिस, फॉरवर्ड बेंडिंग. ऐसे याद कर लो, काय मतलब आगे की तरफ बेंड हो गया है. काई होगा तो आगे गिर ही जाएंगे. काई मतलब काइफोसिस मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग. स्कोलियोसिस मतलब लेटरल बेंडिंग स्पाइन का ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम will lead to asymmetry of the chest and if severe may significantly restrict lung movement. A normal chest x-ray is seen in figure 12.5 something. So severe airway obstruction, particularly long term as COPD, may lead to an overinflated lung. On examination, the chest may be barrel-shaped, most easily appreciated as increased anteroposterior diameter, making the horizontal cross section जो होता है more circular. On X-ray, the hemi diaphragms जो होते हैं appear lower than usual and flattened. ठीक है. मूवमेंट ऑफ द चेस्ट देख लेते हैं. सो व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट? सो लुक टू सी इफ द चेस्ट मूवमेंट आर सिमेट्रिकल. इफ दे सीम टू बी डिमिनिस्ड ऑन वन साइड, सो दिस इज जस्ट लुकिंग, इंस्पेक्शन है. ठीक है, अभी छूना नहीं है. अब देन हमारा पैल्पेशन आएगा ना, तो हमें हाथ को ऐसे करके टच करके देखना है. ठीक है, कि वो चेस्ट जो है कितना एक्सपैंड कर रहा है, दोनों साइड सिमेट्रिकल है कि नहीं. अभी हमें बस देखना है कि चेस्ट जो है सिमेट्रिकली मूव कर रहा है कि नहीं. इफ दे सीम टू बी डिमिनिस्ड ऑन वन साइड, देन दैट इज लाइकली टू बी साइड ऑन विच द एबनॉर्मैलिटी, विच इज़ एन एबनॉर्मैलिटी. एक साइड कम हो गया है तो उधर ही एबनॉर्मैलिटी है यूजुअली. इंटरकोस्टल रेसेशन तो नहीं हो रहा है, जैसे कि ड्राइंग इन ऑफ इंटरकोस्टल स्पेसेस विथ इंस्पिरेशन में इंडिकेट सीवियर अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एज इन लैरेंजियल डिजीज और ट्यूमर ऑफ द ट्रेकिया. In COPD, the lower ribs often move paradoxically inward on inspiration instead of normal outward movement. So paradoxical breathing होता है COPD में, lower ribs का.
So features to note in assessing the shape of the chest: kyphosis, scoliosis, flattening, pectus excavatum, pectus carinatum तो नहीं है, ओवर इन्फ्लेशन नहीं है, प्रीवियस सर्जरी कॉजिंग एसिमेट्री तो नहीं है, सच एज थोरैकोप्लास्टी. नाउ फीलिंग. अब हम लोग पैल्पेशन में चले गए. पैल्पेशन ऑफ द चेस्ट, राइट. कहाँ तक फील करना है हमें? ओके. फीलिंग. चलो फील करते हैं चेस्ट को. सो लिम्फ नोड पहले देखना है. द लिम्फ नोड इन द सुप्रा क्लैविकुलर फोसा, सर्वाइकल region, axillary region should be palpated. Do not forget to feel gently behind the sternocleidomastoid muscle. If they are enlarged, this may be secondary to the spread of malignant disease. ठीक है, from the chest. And such finding will influence decision regarding the treatment. Lymph node in the neck are best felt by sitting the patient up and examining from behind. Okay. Now swelling and tenderness देखना है. So it is useful to palpate any part of the chest that presents an obvious swelling. And or where the patient complains of pain. ठीक है. फील जेंटली बिकॉज प्रेशर में इंक्रीज द पेन. हमें देखना है स्वेलिंग है क्या, पेन कहाँ पे पेशेंट बोल रहा है. जेंटली फील करो क्योंकि पेन बढ़ सकता है. ऑफन इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ मस्कुलोस्केलेटल पेन टू आइडेंटिफाई अ साइट ऑफ टेंडरनेस. एक पर्टिकुलर साइट ज़रूरी है निकालना. सर्जिकल एम्पाइमा, air in the tissue which feels like popcorn or bubble paper underneath the skin. सर्जिकल एम्पाइमा है ना, एम्फाइसीमा. सर्जिकल एम्फाइसीमा में क्या लगेगा? पॉपकॉर्न या फिर बबल जो अंडरनीथ द स्किन इज कॉज्ड बाय ट्रॉमा, नीमोथोरैक्स, pneumomedia and infection, as well as chest instrumentation following surgery or chest drain. Now trachea and heart. So the position of cardiac impulse and trachea should then be determined. उसके बाद हमें देखना है कि पहले फिर हमें देखना है कि कार्डियक इम्पल्स, ट्रेकिया का पोजीशन देखेंगे, देन कार्डियक इम्पल्स का पोजीशन देखेंगे. फील फॉर द ट्रेकिया बाय पुटिंग द सेकेंड एंड फोर्थ फिंगर, this fourth finger of the examining hand on each edge of the sternal notch, and use the third finger to assess whether the trachea is central or deviated to the side. Warn the patient in advance what are you about to do, or avoid handedness in the situation. Rough technique is uncomfortable for the patient who may feel like he is being choked. A slight deviation of the trachea to the right may be found in healthy patient. राइट में थोड़ा सा ट्रेकिया शिफ्ट हो सकता है, हेल्दी पेशेंट में भी होता है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार्डियक इम्पल्स. नाउ कार्डियक इम्पल्स का अगर डिस्प्लेसमेंट है विदाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेकिया मे बी ओइंग टू द स्कोलियोसिस की वजह से कार्डियक इम्पल्स जो है वो शिफ्ट कर गया टू अ कंजेनाइटल फनल डिप्रेशन ऑफ द स्टर्नम. पेक्टस एक्सकावेटम कहते हैं. कितना अजीब बात है ना, धस गया है बट एक्सकावेटम कह रहे हैं. और टू एनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्ज हो गया है. इफ द एब्सेंस ऑफ दीज कंडीशंस आर सिग्निफिकेंट displacement in the absence of these conditions, a significant displacement of the cardiac impulse or trachea or both together suggests that the position of the mediastinum have been altered. ठीक है. So the by disease of the lungs or pleura, the mediastinum may be pushed away from the affected side. Contralateral deviation by a pleural effusion or pneumothorax, fibrosis or collapse of the lungs will pull the mediastinum towards the affected side.
Now we can see chest expansion. अब देख सकते हैं. Now points to note on palpation of chest. जब palpate छू के कर रहे हैं तो swelling देखना है. Surgical emphysema तो नहीं है. Now pain and tenderness नहीं है, including over the spine. Trachea position देखेंगे. Cardiac impulse देखेंगे. ठीक है. एसिमेट्री तो नहीं है. देन टैक्टाइल वोकल फॉर्मेटस होता है, वो देखेंगे. नो कॉजेज ऑफ पेन एंड टेंडरनेस इन द चेस्ट, अ रिसेंट इंजरी इन द चेस्ट वॉल और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, कफ fracture, intercostal muscular pain. As a rule, localized painful spot can be discovered on pressure. A painful costochondral junction जैसे कि Disease syndrome, secondary malignant deposition in the rib. Herpes zoster before the appearance of the rash, spinal tenderness secondary to the infection of the malignancy. Now we can see chest X-ray in severe chronic obstructive pulmonary disease. ये तो इधर कम हो गया नीचे, यहाँ पे पता नहीं क्या ये. अच्छा स्टमक का गैस है. कैन बी सी थोड़ा नॉर्मल लग रहा है. कांट इवन मेक आउट. नॉर्मल चेस्ट एक्सरे ऐसा होता है. अरे बाप रे. नॉर्मल चेस्ट एक्सरे इज लाइक दिस और COPD का ऐसा हो जाता है. कितना बड़ा हो गया है, राइट? इतना बड़ा हो गया है. Now COPD में था वो. Now chest X-ray showing lobar collapse. So the first one, this one, is chest X-ray showing right. This is the right side. Right upper lobe का collapse हो गया है. यहाँ पे upper lobe का collapse हो गया. Note the raised tented right hemidiaphragm. ये देखो टेंट की तरह हो गया है. Now this one is chest X-ray showing right middle lobe का collapse हुआ है. ये middle lobe ये रहा. The right heart border has become obscured. Right heart का border जो है obscure हो गया. Now this one is chest X-ray showing right lower lobe का collapse. This is the lower lobe का collapse हो गया. Note the right hilum is lowered and behind the right heart. लोब जो है हार्ट के पीछे आ गया. Now this is chest X-ray showing left upper lobe का collapse. ये left upper lobe का collapse हुआ है. नॉट द वेल लाइक अपीयरेंस ओवर द. ऐसा लग रहा है कोई वेल, यानी वो जो शादी वाला वेल नहीं होता है वो डाल दिया ओवर द लेफ्ट हेमीथोरैक्स with loss of left heart border silhouette. Now this is chest X-ray showing left lower lobe collapse हो गया है, also known as Sale sign. ठीक है, this is Sale sign because the lobe collapse and sits behind the left side of the cardiac silhouette and obscures the medial hemidiaphragm silhouette. ओके गाइज, मैं अब थोड़ा देर का रेस्ट ले रही हूँ. देन वी विल रीड चेस्ट एक्सपेंशन. अच्छा ये चेस्ट एक्सपेंशन पढ़ लेते, फिर परकशन से शुरू करेंगे. So chest expansion as well as by simple inspection, possible asymmetrical expansion of the chest may be explored further by palpation. Face the patient and place fingertips of both hand on either side of the lower rib cage so that the tip of the thumb meet the midline in front of the chest but not touching the skin. स्किन को टच नहीं करना है. A deep breath by the patient will increase the distance between the thumb and indicate the degree of expansion. If one thumb remains closer to the midline, it suggests diminished expansion on the side. Essentially, the hand are being used like a pair of caliper used to measure the expansion of the lateral base of the lung where maximum expansion occurs. Tactile vocal formatus is detected by palpation, but this is not a commonly used routine examination technique. It is discussed further under auscultation below.
Now, from percussion to auscultation, we will read, but after some time, and then putting it all together, examination of the chest है ये सारे. Then we will see other investigation. And then it will be done. So one more lecture and then it will be done. Thank you guys.